पोर्ट इन मैरीटाइम की जो लाइफ है वो बहुत ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग लाइफ, अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ है कि यहाँ पर जब भी आप काम करते हो तो काम करने के साथ साथ जो समंदर का जो जो व्यू जो नज़र आता है उसमें आपको बहुत मज़ा आता है। समुद्र पे काम करने का ऐसा मज़ा होता है जिसमें आप वो सुकून महसूस करते हो। और आपको समुद्र पसंद है तो आप स्पेशली इस इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें काम करने के साथ साथ लुत्फ़ सबसे ज़्यादा ये आता है कि आपको हर वक्त समुद्र आपके सामने होता है। और इसमें तो काम करने का सबसे बड़ा मज़ा यही है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करते हो और इस इंडस्ट्री में काम कर कर अपना एक्सपीरियंस भी आपको ज्ञान होता है। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ा आपको तब आता है तब आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ इंगेज होकर काम कर रहे हो और मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हो और सबके साथ फ्रेंडली होकर काम कर रहे हो, तो आपको काम करने का बहुत मज़ा आता है। मुझे पोर्ट इन मैरीटाइम इंडस्ट्री में काम करने का 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है। नाइट शिफ्ट में काम करने से बहुत सारे लोग जो वो हमेशा घबराते हैं, स्पेशली बिकॉज नाइट में काम करने पे आपको बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड पड़ता है और ऑब्वियसली नाइट में काम करना इतना आसान नहीं है। बट टर्मिनल की जो लाइफ है पोर्ट इन मैरीटाइम इंडस्ट्री की स्पेशली मैं बात करता हूँ, यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ नाइट में काम करने का एक अपना ही मज़ा है। आपको टर्मिनल पे स्पेशली रात को जो आपको वेसल दिखाई देते हैं ये इतना खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं, तो आपको काम करने का यहाँ पर एक अपना ही मज़ा हमेशा आएगा। मेरी टर्मिनल पर नाइट ड्यूटी नहीं हुआ करती थी, मैं बेसिकली डे ड्यूटी पे था। बट मेरी अंडर सुपरविजन में जो सुपरवाइजर हुआ करती थी देखिए एब्सेंस में मुझे आना पड़ता था। जब भी मैं नाइट शिफ्ट में आया करता था तो मेरी बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हो जाया करती थी, बिकॉज नाइट शिफ्ट में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड आता है और आपकी रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। बट नाइट शिफ्ट में आने के बाद जो नाइट का एनवायरनमेंट जो मुझे मिलता था वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट, टर्मिनल पर समंदर का रात का जो मंजर है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। अगर आप कभी नाइट में समंदर के पास और स्पेशली वेसल के पास में, वेसल कह रहा हूँ इस शीप को जिसको हम टर्मिनोलॉजी में वेसल कहते हैं, आप इसके समंदर के करीब जब जाते हैं तो इतना खूबसूरत आपको ये काम होते हुए डिस्प्ले देता है। और ये वर्क 24/7 यहाँ पर चल रहा होता है। जब भी वेसल बर्थ पे होगा ये वर्क हमेशा इस तरह चलता होगा। बात करते हैं किसी बड़े टर्मिनल की, तो उसमें जब भी कोई वेसल बर्थ होता है, उस बर्थ होने के बाद जितना भी कार्गो जो है वो सारा का सारा जो है वो डिस्चार्ज होता है। इसके बाद वो डिफरेंट जो है वो मतलब ग्रेइंग बेगिंग स्टेशन होते हैं, जितने भी टाइप के लोडिंग स्टेशन स्पेशली हम इसको कहते हैं, जो लोडिंग स्टेशन का जितने भी होते हैं उस पर तमाम व्हीकल्स जो हैं वहाँ से बैग लोड करती हैं। उस लोड करने के बाद तमाम व्हीकल जो है वेब्रिज पे आने के बाद अपना वेट करवाती हैं और वो यहाँ से एग्जिस्ट होकर कस्टमर के पास कार्गो पहुंच जाता है। इस पिक्चर में जो आपको जो वेब्रिज नजर आ रहा है ना, ये जो इस पे व्हीकल इस वक्त मौजूद है ये वेब्रिज पर मौजूद है। इसको हम अपने टर्मिनोलॉजी में टर्मिनोलॉजी में वेब्रिज कहते हैं। ये व्हीकल इस वक्त वेब्रिज पे मौजूद है। सॉफ्टवेयर जो एलईडी में आपको डिस्प्ले हो रहा है इसको हम व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये वो डैशबोर्ड है जो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ डैशबोर्ड है। इसमें आपको डिस्प्ले होता है व्हीकल नंबर, व्हीकल का फर्स्ट स्पीड और व्हीकल का ग्रोस स्पीड। हर व्हीकल का ये 3 चीजें लास्ट में डिस्प्ले होनी है। विदाउट वेट किए बगैर वेब्रिज तक व्हीकल टर्मिनल से आउट नहीं हो सकती। जब भी व्हीकल टर्मिनल में एंटर होगी पाएगी इसका फर्स्ट पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगी टर्मिनल के और उसके बाद इसका ग्रोथ स्पीड इस वेब्रिज पे आने के बाद इस सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले होगा। आपको इस वेब्रिज के पास एक वॉच नजर आ रही होगी, बेसिकली वॉच नहीं है, ये एक वेट इंडिकेटर है। ये वेट इंडिकेटर ये बताता है कि एग्जैक्ट इस व्हीकल का क्या वेट है। इंडिकेटर किसी वजह से बंद हो जाए तो वो एलईडी में वेट डिस्प्ले नहीं होगा। ये वेट इंडिकेटर जो है एक एपीआई का काम कर रहा है। जो भी व्हीकल का वेट होता है वो वेट आगे सेंड करता है सॉफ्टवेयर को और वो सॉफ्टवेयर जो व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है सामने डैशबोर्ड जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वहां पर ये वेट आपको नजर आता है। से इस वेट इंडिकेटर में वेट नजर नहीं आएगा या ये वेट इंडिकेटर ब्लॉक हो जाएगा तो उस एलईडी में वेट कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर किसी वजह से जो व्हीकल जो है वो वेब्रिज पे इसका वेट नहीं होता और वो बाईपास करके वो जब गेट पर आती है तो तब तक इसका बैरियर ओपन नहीं होगा, तब तक वो वेब्रिज पे सेकंड वेट नहीं करवाएगी, क्योंकि बैरियर का यहाँ पर वेब्रिज के साथ आपस में इंटीग्रेशन है। इसके दरमियान जो इंटीग्रेशन है बैरियर और वेब्रिज की, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तब तक वेब्रिज पे व्हीकल अपना सेकंड वेट नहीं करवाएगी तब तक बैरियर ओपन नहीं होगा। बैरियर को परमिशन नहीं होती है
तब तक वेवब्रिज पर वेट नहीं होता। वेवब्रिज पे सेकंड वेट होने के बाद ही बैरियर जो है वीकेंड के लिए ओपन होगा। बैरियर की वेवब्रिज की इंटीग्रेशन यहाँ पर ये काम करती है। Lives. It's a world of colossal ships, intricate logistics, and dedicated individuals working around the clock. The invisible force that keeps our world running, a silent engine driving global commerce and connecting continents. It's a network of sea lanes, ports, and vessels that facilitates the movement of goods on an unprecedented scale. Every day, ships move everything from your morning coffee, sourced from distant lands, to your smartphone, assembled from components manufactured across the globe. Across oceans, braving storms, and navigating complex routes to deliver the goods we rely on. This industry is the lifeblood of global commerce, the very foundation upon which our modern economy is built. Operating non-stop in every kind of weather, 24 hours a day, 365 days a year, ensuring the continuous flow of goods across the planet. Most people see a ship and think nothing of it, a distant silhouette on the horizon, missing the intricate choreography behind the scenes, the complex network of logistics, and the sheer scale of the operation. Longshoremen, port pilots, and engineers all work tirelessly to keep goods flowing, ensuring that shelves are stocked and supply chains remain unbroken. It's a world built on grit, precision, and respect for the sea, demanding skill, dedication, and an unwavering commitment to safety. Without shipping, the global supply chain would grind to a halt, leading to shortages, economic disruption, and a fundamental shift in how we live. For thousands of years, we've relied on ships to connect continents and cultures, facilitating trade, exchanging ideas, and shaping the course of history. Today's steel giants and sprawling ports are the modern evolution of that ancient tradition, a testament to human ingenuity and our enduring desire to connect with the world. If you want to move a long way, for a reasonable cost, there's simply no better way than by sea. You put it on a ship. The price of gas, the food on your table, the electronics you buy, it all depends on healthy shipping lanes and efficient ports, a complex ecosystem that requires constant maintenance and vigilance. When things go wrong, the ripple effects are global, impacting economies, disrupting supply chains, and affecting the lives of millions. Understanding this industry is key to understanding our modern world, its interconnectedness, and its reliance on the smooth functioning of global trade. It's the backbone of how we live today, a vital artery that sustains our globalized society and shapes our future. So where do these massive ships go after their long voyages across the ocean? Where do they find respite and offload their precious cargo? Ports. They're much more than just a place to tie up a vessel. They are vital hubs of activity. Think of a port as a massive, highly organized transfer station, a critical node in the global supply chain. It's the place where the sea meets the land, where maritime transport connects with inland infrastructure. Here, cargo is carefully unloaded from the ships, meticulously sorted according to its destination, and then efficiently sent on its next journey inland. This onward journey can be by truck, speeding along highways, by train, chugging along railways, or even by smaller vessel, navigating inland waterways. Ports are buzzing ecosystems, alive with the activity of towering cranes, vast warehouses that store goods temporarily, and complex networks of railways that stretch far inland. When a ship arrives, experienced harbor pilots skillfully guide it through the waterways. Powerful tugboats gently nudge it into its designated place at the dock, and then the real demanding work truly begins. The main event, the heart of the operation, container handling. Giant gantry cranes like mechanical giants lift these steel boxes with incredible precision. Highly skilled operators perched high in their cabins must place each container perfectly, ensuring stability and efficiency. They're moving tons of cargo in a matter of seconds, a testament to the speed and efficiency of modern port operations. Once unloaded, containers are whisked away to vast storage yards, stacked high like colorful building blocks, awaiting their next move in the global supply chain. But ports handle far more than just containers. They are equipped to manage a wide variety of goods. This includes bulk goods like grain and coal, liquids such as oil and gas, vehicles of all shapes and sizes, and even the arrival and departure of cruise passengers.
All of these diverse elements pass through the port's complex network. Each terminal within a port is highly specialized to handle specific types of cargo, from dedicated grain terminals to oil tanker facilities and specialized car carrier docks. Ports are dynamic, multifaceted environments, constantly adapting to the ever-changing demands of global trade. They are all meticulously built and managed to keep the world's cargo flowing smoothly and efficiently. They're the critical link, the essential interface in the intricate web of global trade, ensuring that goods reach their destinations around the world. Let's zoom out, take a step back and look at the bigger picture. How does a port in China, bustling with activity, connect to a store shelf in America, stocked with goods from around the globe? It seems like a world away, doesn't it? Ships are the hands of global trade, tirelessly traversing the oceans, carrying the world's goods. And ports are where the handshake happens, the crucial meeting point where goods transition from sea to land and vice versa. It's a carefully orchestrated dance of logistics. Countries trade resources and products, everything from raw materials to finished goods, fueling economies worldwide. And ships make it possible, cost-effectively and at scale, moving vast quantities of goods across vast distances. A single container ship can carry over 20,000 containers, a floating warehouse of goods destined for consumers around the world. Far more than planes or trucks ever could, making maritime transport the backbone of global commerce. This efficiency makes global trade affordable and accessible, allowing businesses to reach customers across continents. Supply chains depend on the maritime leg, the ocean voyage that connects producers and consumers. The longest and most critical part, often spanning thousands of miles and weeks at sea. Delays at sea, even seemingly minor ones, or in port, can disrupt factories and spoil goods, creating ripple effects throughout the global economy. Shipping lanes are the superhighways of the sea, the invisible routes that crisscross the globe, connecting manufacturing hubs to consumer markets, ensuring a steady flow of goods to meet global demand. Ports are strategic nodes, vital points in the global network. Their efficiency shapes entire economies, influencing trade balances and economic growth. A modern, well-placed port, equipped with the latest technology, can drive regional growth and jobs, creating opportunities for local communities. The world's prosperity flows through these maritime arteries, the lifeblood of global commerce. None of this works without people on land and at sea. On ships, crews spend months away, led by the captain and deck officers who navigate and manage cargo. In the engine room, marine engineers keep the ship running, solving problems miles from help. On shore, longshoremen operate cranes, drive trucks, and handle cargo with skill and care. Foremen and superintendents coordinate the complex dance of loading and unloading. Vessel planners map out where every container goes for balance and efficiency. Harbor pilots, tugboat crews, customs brokers, and maintenance teams all play vital roles. From port managers to security guards, every job is essential. It's a world of specialized skills and teamwork. The goal? Keep cargo moving safely and efficiently. The maritime industry is powered by people. Today's docks are high-tech hubs, transformed by innovation. Cranes are bigger, faster, and often semi-automated, operated remotely for safety and efficiency. Automated stacking cranes and driverless vehicles move containers with robotic precision, guided by central computer systems. Terminal operating systems track every container, optimizing workflow and reducing errors. Paperwork is now digital. Information flows instantly between shipping lines, truckers, customs, and ports. Truck drivers use apps to schedule pickups, cutting congestion and emissions. On ships, GPS, electronic charts, radar, and satellite communications have revolutionized navigation and safety. Real-time data lets companies monitor engine performance and cargo conditions from anywhere. It boosts capacity, safety, and sustainability. This tech wave is here. AI and the Internet of Things are transforming ports and ships. Imagine a smart port where cranes, trucks all share real-time data, creating a digital twin of the entire operation and predict bottlenecks and optimize every move. Sensors and AI to monitor engines, routes, and cargo, reducing fuel use and predicting maintenance.
the creating new jobs, data scientists, robotics engineers, cybersecurity experts. Rate a crane from miles away. The industry still needs people. Environmental impact. Ships and heavy fuel oil producing greenhouse gases and pollution. लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना स्पेशली मत भूलिए। आप ग्लोरियस लर्निंग के प्लेटफॉर्म में हर वक्त लर्न करने का ही मौका मिलता रहेगा। नई वीडियो में फिर आपसे नहीं दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।